Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to another program of Kids Time, and we hope the viewers all over the world are joining in with us and enjoying this program. And as always, we take the information that we discuss and we learn in the program from the Waqfin in our syllabus so that viewers all over the world can follow us and join with us. जैसा कि शाज़िबा जी ने बताया कि हमारा प्रोग्राम जो है वो वक्फ़े नौ के सिलेबस से हम लेते हैं, उनके निसाब को हम डिस्कस करते हैं। ना सिर्फ इसका मकसद याद करवाना है, बल्कि इसका एक मकसद ये भी है कि बच्चे ये समझ सकें, ये जान सकें कि जो दुआएं, जो अहादीस और जो जनरल नॉलेज वो याद कर रहे हैं उसका असल मकसद क्या है और उसके मीनिंग्स क्या हैं। शुरू करें आज का प्रोग्राम। जैसा कि हम हमेशा सूरत से और कुरान के किसी हिस्से से शुरू करते हैं, तो आज हमारे प्रोग्राम में शामिल है सूरह फील। कौन शुरू करेगा? फरीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। जज़ाकल्लाह। ट्रांसलेशन इसरा। Urdu. मैं पनाह मांगती हूँ दुत्कारे हुए शैतान से, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा ही मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। क्या तू नहीं जानता कि तेरे रब ने हाथी वालों से क्या सलूक किया? क्या उसने उनके तदबीर को रायगा नहीं किया और उन पर गौल दर गौल परिंदे नहीं भेजे? वो उन पर कंकड़ मिले खुश्क मिट्टी के ढेलों से पथराव कर रहे थे, बस उसने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। जज़ाकल्लाह। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Nahia. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful, hath thou not seen how thy Lord dealt with the people of the elephant? Did he not cause their plan to miscarry? And he sent against them swarm of birds, which ate the carrion, striking against them stones of clay, and thus made them like broken straw eaten up. जज़ाकल्लाह। जी, क्या समझ आई थी आपको इसकी, इस सूरत की? जी बरीरा। It says in the surah that there was this man called Hazrat Abraha Ashram, and he wanted to take the revenge of 20 people killing 20,000 Christians. So he wanted to destroy the Kaaba, and once he went to Mecca, and then he was about to destroy Kaaba, but then there was no one to protect the Kaaba except from Allah, and then there was this great plague, and everyone had caught it, and then after they were all ill, and then there were this flock of birds, and they went onto them and they ate all of their skin and made them like rotten straw eaten up. जी, उसने क्यों किया था? वो क्यों चाहता था खाना काबा को तबाह करना? फरीद। ताकि वो एक चर्च बना ले। क्यों नहीं? और सजीला। क्योंकि किसी बंदे ने शक किया था उनकी चर्च को, तो उन्हें गुस्सा चढ़ा था, तो उन्होंने सोचा था कि अगर उन्होंने हमारे चर्च को ख़राब किया तो हम उनके काबा को ख़राब करेंगे। जी,
उन्होंने एक चर्च बनवाया था जो सारे का सारा जो है वो सोने के पानी के साथ उसको बनाया था, और एक अरब का एक आदमी उसने जाके उनके चर्च को गंदा किया, तो जिसका बदला लेने के लिए वो शख्स जो है वो आया और उसने कहा कि वो खाना काबा को तबाह कर देगा। तो अल्लाह ताला ने उसके साथ क्या किया? जी नाया, पनिशमेंट दिया था। जी, उसको पनिश किया। आपने देखा है कि आजकल भी ये सूरत जो है वो मुसलमानों के लिए जो है वो एक मिसाल है कि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके पास बहुत सारी पावर है, बहुत सारे वेपन्स हैं, वो क्या करते हैं कि मुसलमान लोगों को जाके तंग करते हैं, उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो एक तरह से मुसलमानों के लिए ये एक तसल्ली भरी सूरत भी है कि अल्लाह ताला जो लोग इस्लाम को बर्बाद करना चाहते हैं या उसको ख़त्म करना चाहते हैं या तबाह करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है वो इसमें इस वाक़ये से मिसाल दी गई है कि तुम बेफ़िक्र रहो, अल्लाह ताला जो है वो कभी भी इस्लाम को ख़त्म नहीं होने देगा, ठीक है। और अल्लाह ताला ख़ुद इसकी हिफाजत करेगा, चाहे किसी के पास कितनी ताकत क्यों ना हो। आपने देखा ना आजकल सीरिया और ऐसे ममालिक जो हैं जहाँ पे मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, और जो सुपर पावर्स हैं वो आके उनको मार रही हैं। लेकिन हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जब खुदा का अज़ाब उनके ऊपर आएगा तो फिर वो कितना दर्दनाक होगा और उनसे अल्लाह ताला कैसे बदला लेगा। As Atyabaji was saying, that the reason that this man wanted to take revenge upon the Kaaba and try and destroy the Kaaba was because a beautiful church had been made, which had been made very nicely, very grandly, and an Arab person had made it dirty. And to take revenge on him, he went to try and destroy the Kaaba. But this is an example for us that Allah won't ever allow the Kaaba to be destroyed, in the same way He won't allow Islam to be destroyed, because it's Allah's religion, and the Kaaba is very, very sacred and a very special place. जी, और अब बारी है हदीस की। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह। And Hadith. who's going to tell us the hadith? Yes, The what did we brief. do? Ista'inu alal hawa'iji bil kitman. Akalla. Translation, Inaya. To fulfill your needs, seek help in secret. Anika? अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए छुपकर मदद मांगो। जी, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए छुप कर मांगो। क्या मतलब है इसका? किससे छुप कर मांगो और क्यों छुप कर मांगो? दबी। Don't ask from somebody else, ask from Allah by praying in namaz. जी, इसका एक, लेकिन फिर क्या हमें छुप कर नमाज पढ़नी चाहिए? नहीं, तो फिर कैसे मांगनी चाहिए? अगर इसमें कहा है कि अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए छुप कर मांगो, तो अल्लाह ताला से जब हम दुआ करते हैं नमाज में तो हमें छुप कर पढ़नी चाहिए। नमाज छुप कर नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि नमाज में हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी जो मुश्किलात हैं उनको दूर फरमाए। और एक और मतलब भी है कि आपको पता है रात के पहर कहते हैं कि अल्लाह ताला खुद आकर बंदे की दुआएं सुनता है और उसकी मुश्किलात सुनता है। तो ये भी एक है कि आप, अगर आप वाकई मुश्किल में हैं तो आप अल्लाह ताला से जाकर दुआ मांगें। और किसी को क्या? ईशा।
It's the same, like you shouldn't ask maybe your parents that you want something that like maybe somebody else has, so instead of asking them you should ask Allah for the things that you need. जी, इसके दो मतलब हो सकते हैं. एक तो ये कि आप अल्लाह ताला से मांगो, और दूसरा ये कि अगर आपको वाकई ज़रूरत है तो अल्लाह ताला अपने बंदों को ही वसीला बनाता है ना, उनको ज़रिया बनाता है, ताकि अगर आपको कोई मुश्किल है तो कोई आपका दोस्त, आपका जानने वाला जो है वो आपकी मदद कर सके. इससे इस हदीस से जो है वो ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला भीख मांगने को जो है या सबके सामने हाथ फैलाने को भी नापसंद करता है. आपको अगर कोई ज़रूरत है तो आप खामोशी से जाकर किसी से मांगें और किसी से रिक्वेस्ट करें कि आपको चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत है. एक तो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कायम रहती है, और दूसरा इंसान को अगर कुछ बिना मेहनत के मिलता जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात में पड़ जाता है, डिज़ायर्स में पड़ जाता है कि हमें ये भी मिल जाए बिना मेहनत के. तो वो भी ठीक नहीं है ना. So At-Tabaji has given us two meanings behind this hadith. The first is that when we want something, we should pray to Allah for it, because Allah is the one that gives us everything that we need and we require. The second meaning that she's given in relation to this is that because the hadith says that if we want to ask for something, we do it in secret. So, for example, if we do need something from somebody else, because Allah has given some people more things and some people less things. So if we need to ask somebody else for something, we do it in secret. We don't tell everybody what we want and what we need and ask everybody to give it to us, but it might be a particular person that you can go to and you can ask for their help. And the reason is that it's a bit embarrassing to ask in front of everyone. It's embarrassing to ask in private anyway, but at least it's only one person knows rather than everybody knowing. And also the meaning behind this hadith is also that sometimes when you get something for having not done any hard work at all, then you come to expect that even though you're not doing any work, you come to expect that you should be given these things. So that's why you shouldn't ask in front of everyone. बतौर अहमदी, बीइंग अहमदी, हमारे लिए ये भी एक बहुत अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हमारी जमात में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मरियम शादी फ़ंड है. अगर किसी को अपने बच्चे की शादी करनी है और उनके पास पैसे नहीं हैं तो जमात जो है वो उनकी हेल्प करती है. अगर कोई विडो है या अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई देखने वाला नहीं है तो जमात उन लोगों की भी हेल्प करती है. तो वो भी खामोशी से जाके उनको बताएं और फिर जमात उनको सपोर्ट करती है, ना कि हर किसी को ये पता चलता है कि आप कितनी मुश्किल में है ना. तो इस लिहाज से भी हम कितने खुशकिस्मत हैं. At-Tabaji is also giving us different examples of where our Jama'at raises money to help free people in different situations. For example, the Maryam Shadi Fund, which is a fund which is set up for if people don't have very much money and they can't arrange the weddings for their children, they can ask for this money. And in the same way, there's funds that we collect for orphans and other people that have problems. But again, you don't have to tell everybody that you need this money, and it's embarrassing to do so. So and the organisation won't tell everybody that they've given this money to this person. As you all know, in the various different programs, we started off discussing the life of the Holy Prophet, sallallahu alaihi wasallam, and then we went to talk about the first Khalifa, which was Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. So today we're going to be talking about Hazrat Umar Farooq radhiyallahu ta'ala anhu. So who can tell us something about Hazrat Umar Farooq? Anika. Hazrat Umar Rajila Anhu was the second Khalifa al-Rashidin. Yeah, Khulafa Rashidin. That's what the title we give to those Khalifas who were after the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And in English it means the rightly guided caliphs. Okay. And that's how we distinguish between the Khulafa Rashidin and the Khalifatul Masih. Okay. कैसे थे आप इस्लाम कबूल करने से पहले? Barira? He was a very fierce and really brave enemy of Islam. Although he was an enemy of Islam, we can see that he was very brave and from what he did.
फिर उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया? Isa. He was going outside with a sword in because he wanted to kill the Holy Prophet, peace be upon him. And then, but a man, someone came past and told him, "Why are you with the sword?" And he told him why he was with the sword. And then he said, "First deal with your sister and brother-in-law who have accepted Islam." Then he went. Hazrat Umar who went to their house, and then they heard them reading the Quran, and he came and then starting beating his brother-in-law, and then his sister stopped him and said, "First listen to us read the Quran." And then they were reading the Quran, and then Hazrat Umar Farooq anhu's eyes were filled with tears because he was so happy about the words and how thoughtful they were. So he went to the Holy Prophet, peace be upon him, still with his sword, and then the Holy Prophet, peace be upon him, asked, "Why are you with us? Why are you standing here?" And then he said, "I have come here to accept Islam." And then and then the Holy Prophet, peace be upon him, told him to read La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, and then he read and he became a Muslim. Yeah. Hazrat Umar had thought that if he kills the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that Islam will be destroyed. So that's why he went. That was for his purpose. But on the way, the people said the man said to him, "No, your sister's gone, so go and deal with that." But he was quite shocked when he went to hit his brother-in-law, and his sister got hurt as well. And that's why it calmed him down a little bit, and he wanted to then listen to the verses of the Quran. But his sister and brother-in-law, they wouldn't let him listen yet until he'd gone and properly calmed down and washed himself, so that he was clean and pure to hear these verses. जी, कितना अरसा उनकी खिलाफत रही थी, वो खलीफा रहे थे? जी, आपको दे माइक में जी 10 साल तक रही थी। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या जो दूसरों की हेल्प करने के लिए था या जी इस तरह दूसरों की हेल्प करते थे? हाँ जी। कैसे? He done the introduction for the Islamic calendar of Hijrah. जी, उनका कैरेक्टर कैसा था? इनाया को थे, आप क्या की बेटी? He was brave and strong. And Isha? He used to help people by at night he would go in disguise, and then he heard a lady, and she had children, but the children were starving because they didn't have any food. So the mother was stirring the pot, but she didn't have any food. She just wanted to make them think that they had food, so they would stop crying. So the Hazrat Umar Farooq anhu asked, "Do you have any food?" She said no. So he went back to his house and brought food for the mother and the children. Yeah. And then there was a bit extra to that. On the way going there, when he was taking the food, his servant said, "Let me carry the things for you," because the servant must have thought, "This is the Khalifa of Islam and I can help him, I can do some work for him." And he said, "No, on the Day of Judgment, you can't carry my load." What he meant by that was that these people are my responsibility, so I will bring the food for them and I will help them. So this was the type of person. He often used to go out in the night to see what was going on in the area, to see what help he could provide for them, because maybe in the day he was very busy, he was surrounded by lots of people, he couldn't find out exactly what was going on with the people and how he could help them. जी, उनकी वफ़ात कैसे हुई थी? बरीरा He was reading वो अपनी नमाज पढ़े थे मस्जिद में, और फिर पीछे से एक पर्शियन स्लेव आया था और उनको मारा था एक sword के साथ. जी. Yeah, Hazrat Umar was stabbed while he was
while he was praying in the mosque, and he died from those injuries. कितनी उम्र थी उनकी जब वो फौत हुए थे? जी दबीर. He was 63. 63 years old. जी उनकी उम्र जो है वो 63 years थी. ये था हमारा जनरल नॉलेज. और आज बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में हमें कुछ दिखाएंगे, कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ. Let's do the poem first. A poem about Hazrat Umar Farooq Radiyallahu anhu. Hazrat Umar was so brave since he was a boy. Riding horse and exercise was what he would enjoy. He was good at speaking when there was any kind of debate, and in boxing or wrestling he loved to participate. Hazrat Umar was so intelligent and wise. He was very truthful. He never told lies. During the time of famine days, he made arrangements in different ways. But he never thought about reciting the Quran. But one day was a big enemy of Islam. But one day he heard the Quran being read, and that's when he chose Islam instead. He became the second Khalifa with Allah's numerous bounties. In his time, Islam reached many far-off countries. Jazakallah. जी दबीर. I'm going to show how to make the English alphabet with rubber bands. So I'm going to start off with A. And I'll do some other ones after this one. So here's A. And here's T. Show the camera. Here's V. Here's L. And I is the easiest because you just put your fingers and Good, Jazakallah. Inaya. इनाया आप दिखाओ. I'm going to do a quick blood rushing scientific trick. Put the ring in one of your hands, and when while I'm counting to 8, put your hand up. The hand in which the ring is. Yes. Put that one up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now put your hands together. Is it this one? Yeah. How did you know that? Because once your hand goes up, the blood rushes down. So when you put it together like this,
your hand will be pale. So you know which hand was up, and that's Yeah. the one the ring was in. Good, clever. So we always have letters and emails and cards from various people, and this is one that we received, and it says, "My name is Ghazala Babar and I'm from Barking Jama'at. I watch your program and I like it very much. I wish I could come to Kids Time and enjoy watching how to make beautiful cards, and I wish I could meet all the Kids Time children, but I live far away so I can't come." And she's told us she's 7 years old. ये था हमारा आज का प्रोग्राम। वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है kidstime@mta.tv और पोस्टल एड्रेस है MTA इंटरनेशनल 16 क्रेस्टन हॉल रोड, पोस्ट कोड है SW18 5QL लंदन UK। इसके अलावा आप ये प्रोग्राम YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। आप YouTube की सर्च बार में टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 किड्स टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.